And what are the, in fact, why the prospectus is needed in the case of a public company, not in a private company? Ma'am, to protect the interest of shareholders. Very. Yes. So therefore, Balindu is right, that to protect the interest of the shareholder. Naturally, in the case of the public company, it is the money of the public which is involved, and therefore, what is expected from the company, that it should invite the general public to subscribe for its securities only and only when all material information relating to the company has been provided in the prospectus. Now, on the basis of the information provided in the prospectus, the shareholders, the person, the member of a public, they may decide whether to purchase the share of that company or not. Fine. So, therefore, the in brief, prospectus is a document, and this document may be in the form of a notice. This document may be in the form of a circular. This document may be in the form of an advertisement, but the objective of this document is to invite the general public to subscribe for the securities of the company. Fine. So therefore, कोई भी जो ऐसा डॉक्यूमेंट आता है which is inviting the general public to make an offer for subscription of the security of the company, that document is to be called as the prospectus. Fine. So therefore, the main part of the chapter relating to prospectus is that, first of all, we need to define prospectus, and in that category we in fact have also tried to understand as to what is this abridged prospectus, what is this red herring prospectus, what is the shelf prospectus, and what sort of liability is of the company and of the directors or the managers of the company in case of any wrong information provided in the prospectus. Fine. And then I said that the prospectus obviously is a very heavy document, and therefore lots of expenses are involved in the preparation of the prospectus, and that is why the Companies Act in fact talks about abridged prospectus. Abridged prospectus means the shorter version of the prospectus, but in even in the abridged prospectus, whatever information is being provided, that information first of all should not only be the complete one but should also be the true one. Fine. Then I also discussed with you as to what is this red herring prospectus and the shelf prospectus. Red herring prospectus means, as I said, that in the case of a prospectus, every information relating to the company and how many securities, what would be the price of the security, that has to be mentioned in the prospectus. But in red herring prospectus, the company does not provide any information relating to the price of the security, and the company also does not provide any information as to the quantum of the security. Fine. So in case of red herring prospectus, there are two prospectus. One is which is a red herring prospectus, which does not specify the price and the quantity of the security. Now therefore, in red herring prospectus, it is the general public who in fact decides at what price they'll be purchasing the security of the company, at what price they'll be purchasing the shares of the company. So bidding is being done by the general public, and therefore on the basis of this bidding, which is called as the price discovery method, the it is via book building process. Book building process means that the company in fact is inviting the general public. Now on the basis of the price or the bidding done by the general public, the company finally decides the price of the share, and the company finally decides how much shares are to be issued in the market. Fine. वो helpful है not only to the already established company but also for a new company. क्योंकि जब हम नई कंपनी, जैसे मैं बोल रही थी लास्ट क्लास में, हम नई कंपनी बनाते हैं तो भाई हमको ये डाउट होता है मेरी कंपनी को कौन शेयर्स खरीदेगा और मुझे कितने शेयर्स मार्केट में लाने चाहिए। तो उससे बुक बिल्डिंग प्रोसेस से आपको पहले पता चल जाएगा कि कितने शेयर्स आपको मार्केट में लाने हैं और कितने लोग इंटरेस्टेड है आपके शेयर्स में।
So it is, in fact, nowadays the companies, in fact, are in fact deciding the price of their security only on the basis of this book building process. Fine. So red herring process is that, prospectus is that. अब दूसरा आपका एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस है. शेल्फ मींस जो आपकी शेल्फ पे रखा हुआ है. तो शेल्फ पे रखा है, उसको आपको बार बार देखने की जरूरत पड़ती है, और बार बार उसमें जो कोई भी चेंज आया तो आपने उठाया वहां से रैक से, और उसमें जो चेंजेस हुए उस डॉक्यूमेंट में आपने डाल के दोबारा से रैक पर रख दिया. सो शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज in fact very beneficial and convenient for those company who on a regular basis they want to raise the capital. Fine. जैसे मैंने मुथूट फाइनेंस के बारे में बोला था, तो वो आपसे सोना लेते हैं और लोन प्रोवाइड करते हैं. अब सोना तो पैसा नहीं बना रहा ना, सोने से पैसा तो नहीं बन रहा ना, गोल्ड से पैसा तो नहीं बन रहा है ना, पर वो गोल्ड ले रहा है और आपको लोन प्रोवाइड करवा रहा है, तो लोन के पैसे कहाँ से आएंगे? तो वो लोन के पैसे कैसे करती है कंपनी? टू इशू डिबेंचर्स टू द जनरल पब्लिक. फाइन. तो ऐसी कंपनी विच इनफैक्ट is to raise the capital on frequent basis. और मैंने आपको बोला था कि प्रोस्पेक्टस आपको जब भी कंपनी इज इनवाइटिंग द जनरल पब्लिक टू ऑफर फॉर इट सिक्योरिटी, उसको प्रोस्पेक्टस लाना ही पड़ेगा. और सो देयरफॉर बड़ा महंगा है प्रोस्पेक्टस को. हर अगर एक साल में आपको 10 बार पैसे की जरूरत पड़ती है तो 10 बार आपको प्रोस्पेक्टस लाना पड़ेगा, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इन कंपनीज के लिए. तो कंपनीज एक्ट क्या कहती है कि तुम भाई शेल्फ प्रोस्पेक्टस कर लो. वो क्या है कि आप जो है बार एक इस शेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. तो एक साल में आप कितनी ही बार यू कैन रेज द कैपिटल, और विदाउट एनी फॉर्मेलिटी ऑफ इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस. फाइन. फिर वो ये कहते हैं कि भाई भाई एक साल के अंदर अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है या वीक हो जाती है या उस पर लिटिगेशंस हो जाते हैं, तो फिर क्या कंपनी को जनरल लोग पब्लिक जो है, क्या उसका राइट नहीं है जानने का कि what are the changes in fact that have been brought into the company, or any litigation against the company that has in fact after the issue of the shelf prospectus. तो उसमें क्या है कि वो एक आपके लिए information memorandum company issue करेगी with the further issue of the whenever the company is inviting the general public to subscribe for its security. वो information memorandum क्या है? वो एक पेज होता है, वो एक डॉक्यूमेंट होता है. तो जैसे जैसे कंपनी फिर आपके पास आपको ऑफर देगी फॉर सिक्योरिटी, तो वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज टू बी प्रोवाइडेड टू यू, जिसमें ऑल द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस सिंस द फर्स्ट इशू ऑफर ऑफ द सिक्योरिटी, all those changes are to be incorporated in that information memorandum. Fine. तो अब आपके लिए convenient हो गया. Fine. तो अब लास्ट जो बात है इस चैप्टर की वो ये है कि देखो जो भी पर्सन है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में एज ए प्रोमोटर मेंशन किया हुआ है, एज ए डायरेक्टर मेंशन किया हुआ है, एज एन एक्सपर्ट मेंशन किया हुआ है, तो अगर कल को जो है कोई भी स्टेटमेंट उसमें मैंने आपकी कंपनी के शेयर लिए और मुझे लगता है कि वन इंफॉर्मेशन इन द प्रोस्पेक्टस इनफैक्ट वाज नॉट अ कंप्लीट वन और मिसलीडिंग है, तो जिनका भी नाम प्रोस्पेक्टस में है उनकी सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी आ जाती है. फाइन. सो सिविल लाइबिलिटी में यू आर क्लेमिंग डैमेजेस, क्रिमिनल लाइबिलिटी में not in civil you are not only claiming damages but you also have a right to resign the contract. आप ये कहोगे कि भाई मुझे आपके शेयर्स नहीं चाहिए, जितना मैंने पैसा लगाया था मुझे वो वापस कर दो, वो कंपनी को करना पड़ेगा. और सबकी लाइबिलिटी होगी जिनका भी नाम प्रोस्पेक्टस में एज अ प्रमोटर, एज ए डायरेक्टर और एज एन एक्सपर्ट लिखा हुआ है. फाइन. तो ये एक क्रिमिनल लाइबिलिटी में क्या होगा कि आपकी लाइबिलिटी सेक्शन 447 में आ जाएगी, जो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में हमने कवर किया था while discussing section 7 of the Companies Act, which in fact is telling us as to how to incorporate a company. Fine. So therefore आपकी सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी, सिविल और क्रिमिनल में फर्क क्या होता है कि क्रिमिनल में आपको फाइन होता है और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है. So therefore Companies Act in fact has very strict provisions as far as the contents of the prospectus is concerned, and therefore it is incumbent upon the company to make sure that
all material information relating to the company is being provided in the prospectus and nothing is being hidden from the general public. Fine. So इस चैप्टर की तीन ही कैटेगरी आप उसको बाइफर्केशन कर सकते हो. One is as to what is a prospectus. The second one is and the kinds of the prospectus. Second one is the contents of the prospectus, and the third one is about the liability in case of any wrong statement or misleading or in case of any untrue statement in the prospectus. Fine. इससे beyond इसमें कुछ नहीं है. There is no case law as such. फाइन. ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अब हमने ये इंक्लूड किया है कि आफ्टर ऑल शेयर्स कैसे लिए जाते हैं, किस डॉक्यूमेंट के थ्रू लिए जाते हैं. फाइन. ये आपका प्रोस्पेक्टस का चैप्टर था. आज मैं स्टार्ट करना चाह रही थी एक नया चैप्टर विच इज अ डायरेक्टर. वेरी वेरी इजी वन. सो डायरेक्टर और प्रमोटर को अगर आप इकट्ठे पढ़ोगे तो दोनों जो हैं मिलते जुलते हैं. फाइन. अब प्रमोटर जैसे मैंने बोला कि डायरेक्टर्स और प्रमोटर इन द सेंस, फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं शुरुआत करती हूँ कि से फॉर इंस्टेंस आप और मैं हमने डिसाइड किया है टू फॉर्म अ कंपनी. तो अब हम अब यू नो इट वेरी वेल दैट फॉर अ पब्लिक कंपनी यू नीड 7 मिनिमम 7 पर्सन. हाँ. और ये जो 7 जो मिनिमम होते हैं दे आर रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है ना. तो आपको पता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कि जिसमें जो विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी. एंड देयरफॉर in the case of a private company, the two subscriber to the memorandum of association, and in the case of the public company, the 7 subscriber to the memorandum of association. Fine. तो हमने कंपनी खोलने का स्टार्ट किया है. तो हम जो हैं जो 2 और 7 हैं वो हम कंपनी खोल रहे हैं तो हम प्रमोटर भी हैं. फिर हम उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे हमारा सिग्नेचर है तो हम हमारा स्टेटस क्या होगा. वी नाउ आर आल्सो बीइंग कॉल्ड एज द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. फाइन. तो अब हमारी ड्यूल पोजीशन आ गई. वन एज अ प्रमोटर, द सेकंड वन एज द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. फाइन. अब तीसरी पोजीशन हमारी क्या आती है कि भाई द naturally if it is a case of a new company, then to run the affairs of the company you need to appoint the directors also, and the onus of providing the company with the first director is upon the subscriber to the memorandum of association. Fine. अब ये जो 2 और 7 लोग जो मैं बोल रही हूँ बार बार, they are being called as the subscriber to the memorandum of association. So therefore the onus is upon these individuals to provide the company with the first directors. Fine. अब वो लोग जो हैं they are completely, you know, they have completely failed in providing the first directors of the company. तो फिर क्या कंपनीज एक्ट कहता है कि देखो या तो आप फर्स्ट डायरेक्टर्स कंपनी के अपॉइंट करो, और अगर आप नहीं अपॉइंट कर पाते हो तो आप सब जो है ऑल ऑफ देम इप्सो फैक्टो वुड बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. समझ गए हो ये बात. सो अब हमारी 3 पोजीशन आ गई है. अ सिंगल इंडिविजुअल इज नाउ having 3 position in the company. One as the promoter, second as the subscriber to the memorandum of association, and third as the director of the company. Fine. So therefore there is no provision in the Companies Act which in fact restricting an individual not to hold 3 positions in a company. Fine. So therefore हमने कंपनी बनाई भी, हम प्रमोटर बने, हमने सब्सक्राइबर भी बने, और तीसरा जो है हम जो बन गए डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑल्सो. फाइन. ये एक पहली बात ऑफ द स्टोरी है एज फार एज द चैप्टर ऑन डायरेक्टर इज कंसर्न. तो अब बात ये है कि हाउ यू नो वुड वी बी डिफाइनिंग द डायरेक्टर. डायरेक्टर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए. क्या क्या हम जो जैसे मैं हर बार जो भी चैप्टर स्टार्ट करती हूँ तो उसमें मैं ये स्टार्ट करती हूँ कि भाई इसका मतलब क्या है, प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन क्या है. और अब मेरा क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द नीड टू डिफाइन दिस कॉन्सेप्ट. क्यों डेफिनेशन की क्यों जरूरत, क्यों आप देखो कि कोई भी लॉ आप पढ़ते हो उसमें सबसे पहले भाई इसको डिफाइन तो करो कि व्हाट इज द नीड ऑफ डेफिनेशन. कुछ आइडिया है why it becomes imperative to define the concept. क्यों जरूरी है उनको डिफाइन करना.
मैम वो क्या बेसिक थिंग्स होती हैं जिनका डिफाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली ये चीज़ें हर जगह पे यूज होती है, जैसे डायरेक्टर है कंपनी लॉ में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि जो हम्म, बेसिकली कंपनी की स्टार्टिंग होती है, जो एक हम्म, कंपनी को पूरी तरीके से ओवरव्यू देता है, जो देखता है कंपनी को डायरेक्ट करता है, वही डायरेक्टर होता है। हाँ, तो लॉ में बेसिकली जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इवन जिनका यूज हर जगह पे है, उनको डिफाइन करना हाँ, बहुत जरूरी हो जाता है। तो हाँ, हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो जो रोहित ने बात किया, भाई डिफाइन की इसलिए जरूरत होती है कि हम पता तो लगाए, हमें पहचान होनी चाहिए ना। वी नीड टू नो। जब हमें उसको डिफाइन के डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन। वंस यू आइडेंटिफाई देन ओनली यू कैन फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। And not only responsibility, if I am being defined, then I also have certain rights also. So apart from the liability, I have certain claims also, I have certain rights also. But question ये है कि क्या मैं उस definition में fall करती हूँ? So इसलिए it is important to define so as to fix a responsibility and so as also to claim the rights. Fine. So identification and definition जरूरी है. For example, अब देखो टेररिज्म की बात करते हैं, तो क्या टेररिज्म को डिफाइन किया है? टेररिज्म को डिफाइन नहीं किया, एक्ट्स ऑफ टेररिज्म को बताया गया है। अब इजराइल जो कर रहा है अगेंस्ट हमास इन गाजा, क्या वो स्टेट टेररिज्म नहीं है? क्या वो स्टेट टेररिज्म नहीं है? इंडिविजुअल टेररिज्म तो आप बात करते हो, टेररिस्ट को आप डिफाइन कर देते हो, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म? अब वो स्टेट्स जो होती हैं वो डिफाइन नहीं करना चाहती हैं। अमेरिकन आर द बिगेस्ट टेररिस्ट। तो बट स्टेट टेररिज्म, क्योंकि एक बार आपने आइडेंटिफाई कर दिया, सो स्टेट वुड बी लेबल्ड एज अ टेररिस्ट स्टेट। तो टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं है, इंडिविजुअल आपको एक्ट्स ऑफ टेररिज्म इज बीइंग डिफाइंड इन वेरियस लॉज। यूएपीए आप ले लो अपना, फाइन। तो पेट्रियट एक्ट ले लो आप यूएसए का, तो उसमें जो है आपको देर इज नो डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, बट देर इज ओनली एक्ट्स ऑफ टेररिज्म विच आर बीइंग डिफाइंड। वायलेंस होती है उसको वो बात करते हैं, फाइन। सो यहाँ पे पॉइंट ये है, it is very necessary to define some terms, because that definition would help us in identification. So once so and so is being identified, then naturally the so and so is to be owes certain responsibility, and so is also having certain rights. So that is why definition is important, fine. तो अब मैं फिर से अगर पीछे जाती हूँ, तो देखो हमने प्रमोटर को मैंने बात किया था कि प्रमोटर इनफैक्ट इज अ टर्म ऑफ बिजनेस। प्रमोटर हैज नोवेयर बीन डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट। तो प्रमोटर जो है, हमने सेक्शन 2 क्लॉज 69 में देखा, तो उसको बाइफरकेटेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें हमें ये कि इसमें जो पर्सन ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है वो प्रमोटर है, फाइन। So but as such there is no definition of promoter. Likewise, if you try to find out as to what is the definition of a director in a company, तो अब देखो सेक्शन 2 क्लॉज 34 of the Companies Act, it in fact is containing, uh, it says that there is a definition of director in section 2 clause 34, but उसको आप पढ़ते हो तो वो क्या कहता है section 2 clause 34, director means a director appointed to the board of company। तो क्या ये definition हुई? क्या ये डेफिनेट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी? नो मैम, ठीक ये है। डेफिनेशन नहीं लग रही है। हाँ, ये तो बट देखो आपका एक्ट यही कहता है, सेक्शन 2 क्लॉज 34 यही कहता है, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी। बट अगर आप जैसे अवतार सिंह की किताब उठाओगे, उसमें नाइजीरियन एक्ट इज बीइंग मेंशन ब्रीफली। वो नाइजीरियन एक्ट में क्या कहते हैं, डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन हु इज हैविंग कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो ये तो समझ आती है, ठीक है ना, ये बात समझ आती है कि एनी पर्सन हैविंग अ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज बीइंग कॉल्ड एज अ डायरेक्टर। पर यहाँ हमारे कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज 34 में, डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। So therefore any person who is being appointed to the board of company means the board of directors जो है,
ठीक है ना, दैट पर्सन इज टू बी कॉल्ड एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये हमारी सिर्फ दिस इज हाउ यू नो द डायरेक्टर इज बीइंग डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट ऑफ 2 clause 34। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को आप जो सेफली जो है, इसमें मेन जो पार्ट्स हैं वो 3 हैं। फर्स्ट इज एज टू what is who is a director, what is the definition of a director. And the second part of this chapter is as to what is the position of a director, because once you identify the position of the director, then again you know it will become easy for you to fix responsibility upon the directors, fine. So पहला part है इस chapter का जो हम करेंगे, that is about the definition of a director. And the second part is about the position of the director, and the third part is about the duties of the directors, fine. इससे beyond आपको इस चैप्टर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, fine. तो जब हम बात करेंगे द डेफिनेशन ऑफ अ डायरेक्टर, उसमें हम ये भी बात करेंगे कि हाउ द डायरेक्टर्स आर बीइंग अपॉइंटेड इन द कंपनी, फाइन। उसमें हम ये भी बात करेंगे एज टू व्हाट इन फैक्ट आर देयर एनी प्रोविजन इन द कंपनीज एक्ट अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो देयरफॉर वो बात भी हम फर्स्ट पोर्शन में ही करेंगे। फिर सेकंड पोर्शन में हम बात करेंगे व्हाट इज द position of the director, and in the third portion we will be talking about as to what are the duties of the director. अब आप अपना केस मटेरियल उठाकर देखेंगे तो उसमें आप देखो कि केस मटेरियल में जितने भी केसेस हैं, all cases are on duties of the director, except जो पहले 2 केस हैं, it is about position of a director, fine। तो अब सबसे पहले मैं किताबों को और किसी भी बेयर एक्ट को सबको हम बंद करके और सीधे से सीधा समझते हैं कि ये जो चैप्टर्स है इसमें जो है कैसे हम इजीली इसको अंडरस्टैंड करें और क्या क्या कौन से सेक्शंस है जिस पे हमको फोकस करना है। पहला जो आपका है that is section 2 clause 34, which is about as to what is the definition of a director. Then the 2 important sections in this chapter are section 149 and section 166. Now section 149 is about as to how how many directors are in the public company, minimum directors in a public company, private company, various other in fact provision relating to the director. But the most important part of section 149 is subsection 6, which in fact is about independent director, and that in fact is the new provision in the Companies Act. It was not in the earlier act of 1956. So the provision relating to independent director is now in subsection 6 of section 149. And another important change that has been introduced in this Companies Act of 2013 is about the appointment of the women director, fine. That was also missing in the earlier act of 1956. And the third major change that has been introduced as far as the chapter relating to director is concerned, it is that out of the total number of the director, 1 director has to be resident in India, fine. ये आपकी major changes हैं that in fact is relating to this chapter on directors, fine. तो अब हम जो है 149 को डील करने से पहले एक हम सिंपल डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने डायरेक्टर को तो डिफाइन किया। डायरेक्टर मींस एनी पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर। एंड नाउ आप देखोगे कि पहले जो 1974 का में एक मेजर चेंज इंट्रोड्यूस किया गया था एज फार एज who can be appointed as the director of the company. So पहले क्या होता था 1974 से पहले even the companies are to be were being appointed as the director in another company, fine. तो अब देखो एक legal person was being appointed as the director in another company.
So that in fact created practical difficulties in fixing responsibility, and therefore the appointment of legal person as a director has been done away with in 1974. So one point is that only individuals are to be appointed as a director in a company. Now if your company is a public company, then as per section 149, that minimum 3 directors are to be appointed in the case of a public company. Now if your company is a private company, then minimum 2 directors are required to be appointed in a private company. And if it is a one person company, so surely the one person is to be appointed as the director of the company. Fine. So therefore uh, now it is for the central government to decide that any class of the company whereby the women director is to be appointed. But then uske jo detail jo hai which companies usme company central government ka criteria ye hai ki if the company having this much paid up capital, so that company is required to appoint a women director. Fine. So therefore ultimately it is for the central, it is not that every company is required to appoint the women director. It is for the central government to decide as to which company in fact should have a women director. Fine. So therefore 149 जो है 149 is about as to uh, how the directors and what is the minimum number of director, that in fact is the focus of section 149. So therefore for a public company minimum 3, for a private company minimum 2, and for one person company it is the 1 director. अब आप पूछोगे कि फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो एक कंपनी में कितने अपॉइंट हो सकते हैं. सो वो कंपनीज एक्ट आपका 149 कहता है कि देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी कैन बी 15. Fine. And therefore but then if the company in fact wants to increase its number of directors beyond 15, then you are required to pass a special resolution. तो मैक्सिमम का जो कंडीशन है वो 15 है. बट आपकी एक बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है. ऑब्वियसली उस कंसर्न में 15 डायरेक्टर से काम नहीं चलेगा, तो आपको ज्यादा डायरेक्टर्स की जरूरत है. तो उसमें द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. फाइन. और दूसरी बात ये है, a single individual can be appointed as a director for 15 companies also. ठीक है, एक पर्सन ही 15 कंपनीज का डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है. बट देन नेचुरली अगर एक ही आप ही जो है 15 कंपनीज में डायरेक्टर हो, तो आप जो है होल टाइम डायरेक्टर नहीं हो, आप पार्ट टाइम डायरेक्टर हो. फाइन. सो आप एक पार्ट टाइम डायरेक्टर हो. सो उस so therefore but then so but difference between part time director and whole time director is that a whole time director obviously cannot be the director for 15 companies. A whole time director is confined to one company, but a part time director, meaning thereby a person holding directorship in 15 companies, that director is being called as the पार्ट टाइम डायरेक्टर. फाइन. तो एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो 15 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है. फाइन. सो ये एक बात है. अब दूसरी बात ये है कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर वन हैज टू बी रेजिडेंट इन इंडिया. आपका टैक्सेशन लॉ तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ होगा ना? टैक्सेशन लॉ तो आप लोगों को नहीं पढ़ा है ना आपने? नो मैम, नो मैम. हाँ. सो देयरफॉर अब आपको बताओ कि रेजिडेंट का मतलब क्या है, क्योंकि सिंपली सेक्शन 149 में तो ये लिखा है कि भाई आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर वन हैज टू बी रेजिडेंट इन इंडिया. ये रेजिडेंट का मतलब क्या है? तो चलो हम डायरेक्टर को छोड़ते हैं, हम हमारे पे ये कंडीशन लगाते हैं, क्या हम लोग रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं? Yes, ma'am. Ma'am, residence means who has an intention to reside in India. ओके, इंटेंशन टू रिसाइड इन इंडिया. तो कोई फॉरेनर इंडिया में आता है एंड ही हैज एन इंटेंशन टू रिसाइड इन इंडिया, हाउ वुड यू यू नो डिसाइड दैट सो एंड सो इज हैविंग एन इंटेंशन? व्हाट इज द Ma'am, क्राइटेरिया? ma'am, criteria will be like whether he is purchasing some assets which is immovable property. अरे By just understanding them that whether he had intention to stay in India or not. If he had intention, then he would be called as a resident.
Okay. So therefore, by purchasing the property in India, intention could be gathered. So meaning thereby, non-resident cannot purchase property in India. मैम दे कैन। फिर उनका इंटेंशन क्या है? टू रिसाइड इन इंडिया। ओके। तो हाँ जी, बलिंदु, व्हाट इज योर आंसर? Ma'am, it depends on the number of days a person is staying in India. Number of days a person is staying in India. Fine. Okay. And Rajat, what is your answer? It would be around if a person is in India for more than 182 days in a year, and there Hmm. are certain other conditions also in different income tax act. Okay. So he's considered as a resident in India, but he's not a citizen, but he's a resident in India. Even a foreigner can be a resident in India. ओके ओके, सो रजत ने लीगली आंसर किया है। बट रजत, आपका थोड़ा, मैं करेक्शन, थोड़ा सा करेक्शन है। नॉट मोर देन 182 days, एटलीस्ट फॉर 182 days, At least, yes, Shan, एटलीस्ट at least, sir. फॉर, सो देयरफॉर resident means physical stay. Resident means physical stay. Residence has nothing to do with citizenship. ठीक है ना? तो सिटीजनशिप जो है वो हर किसी रेजिडेंट को नहीं मिलती है। अ फॉरेनर कैन आल्सो बी रेजिडेंट इन इंडिया। फाइन, कोई एक फॉरेनर है वो इंडिया में पिक्चर, एंड रेजिडेंस इज टू बी असर्टेन बाय काउंटिंग योर फिजिकल स्टे इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। फाइन। सो अब आपका जो करंट असेसमेंट ईयर है, इट इज 2023-24। it starts from 1st April and it ends on 31st March. फाइन। सो ये असेसमेंट ईयर है। असेसमेंट ईयर का प्रीवियस, जैसे मैं जॉब करती हूँ, मुझे टैक्स देना होता है। आप लोग तो अभी टैक्स का आपको पता नहीं है ना। तो अब मैंने अभी मेरा जो 2023-24 जो है असेसमेंट ईयर है, इसमें मुझे टैक्स देना पड़ा है। कब का? ऑफ 2022-23, फ्रॉम 1st April 20 of 2022 टिल 31st March 2023 मेरी कितनी इनकम थी 12 महीने में? ठीक है ना? दैट इज प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का टैक्स हम जो असेसमेंट ईयर में करते हैं। लाइकवाइज कि प्रीवियस ईयर में देखो, मैं जो हूँ, आई वॉज रेजिडेंट इन इंडिया, क्योंकि इन द प्रीवियस ईयर I was in India at least for a period of 182 days. So therefore, ये residency has nothing to do with citizenship. Resident means that any person whose stay in India is at least for 182 days. अब ये जरूरी नहीं है कि आप लगातार 182 दिन इंडिया में रहोगे। पूरे 365 दिन में अगर आप 182 डेज इंडिया में रहे हो, आए और चले गए, फिर आए फिर चले गए, पर टोटल आपका जो डेज जो है इन इंडिया, फिजिकल स्टे इन इंडिया इज 182 days, then you are said to be resident in India. Fine. अब ये कॉन्सेप्ट इसलिए हुए हैं कि एंड नॉन रेजिडेंट कौन सा होता है? नॉन रेजिडेंट वो होता है जो डज नॉट स्टे इन इंडिया फॉर 182 days. फाइन। बट टैक्सेशन लॉ ये कहता है कि चाहे आप रेजिडेंट हो, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, को एक पैसा भी आपने इंडिया में कमाया है या इंडिया के कनेक्शन से कमाया है, तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। फाइन। So even a non-resident who is purchasing property in India, that non-resident obviously is assessed in respect of any income earned out of this property in India. Fine. But corporate law में ये है कि the directors of out of all one has to be resident in India. क्योंकि एक तो बात ये है ना कि अगर, जैसे मैंने शुरुआत क्लास में बोला था, इंडियन कंपनी है, सारे पाकिस्तानी है, ठीक है ना? अब वो सारे पाकिस्तान में ही रह रहे हैं, तो कल को अगर हमें केस फाइल करना पड़ेगा तो कोई अवेलेबल तो हो इंडिया में, ठीक है ना? सारे अगर पाकिस्तान में बैठ जाएंगे तो फिर कैसे केस फाइल होगा ना? कैसे उनकी लाइबिलिटी अराइज होगी? तो इसलिए ये कहते हैं कि आउट ऑफ ऑल वन हैज टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। सो ये कंडीशन इन फैक्ट is a new condition which is being introduced in the new act of 2013. Fine.
तो ये एक बात है सेक्शन 149 की कि आपका जो है मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टर्स प्लस हाउ मेनी डायरेक्टरशिप एन इंडिविजुअल in fact can hold in a company in various companies, plus that which company in fact is to have a women director. So therefore it is for the central government to decide. Now the most important part of section 149 is subsection 6. Subsection 6 is about independent director. Now, if you remember, when we did the case of Erlangers, which is about the position of a promoter in a company, and therefore their Lord Keynes said way back that in a company, the promoter in fact should provide the company with an independent and competent board of directors. Fine. So ये बात लॉर्ड केन्स ने कितने साल पहले की थी. तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जरूरत क्यों फेल हुआ. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जरूरत इसलिए फेल हुई क्योंकि अगर हम सोलोमन्स के वाले केस को उठा लें, अगर हम ली वाला केस को उठा लें, तो उसमें देखो एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ वन फैमिली. फाइन. वो फैमिली जो है जनरल पब्लिक का पैसा लेकर, एंड देयरफॉर एवरीथिंग इज बीइंग डिसाइडेड बाय द फैमिली. सो नाउ देयरफॉर द क्वेश्चन इज who eventually would be protecting the interest of the general public who has invested their money into the company. ठीक है ना. उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाला कौन होगा. तो इसलिए जो है it in fact it was required that there should be some independent directors in the company. तो अब एक जो चीज आपको you need to remember that as far as appointment of independent director is concerned, independent directors are being selected. Independent directors are not being appointed by the company, whereas the regular directors are being appointed by the company. अब इसमें फर्क क्या है. फर्क ये है कि अगर आप और मैं are appointing we have a desire to be appointed as a director in a company, then it is for the shareholder of the company in its general meeting to decide that whether we and you are competent to be appointed as the director of the company or not. So I mean to say that every director of the company is being appointed by the shareholder in its general meeting. Fine. Whereas if it is the case of independent director, independent directors are being selected by the company. Fine. अब वो selection कहाँ से होता है. Selection is out of a data bank which is being maintained by certain institutions which are being approved by the government of India. Fine. तो वो जो data bank है which only some institutions are required to maintain, वो institutions जो हैं वो आपका for example आप और मैं interested है independent director बनने में, तो हमारा जो नाम है, हमारा जो qualifications है, everything is to be maintained by those institutions in their data bank. और जो कंपनीज जो हैं इन इंस्टीट्यूशन के डेटा बैंक को देख के ऑन द बेसिस ऑफ दिस दे सेलेक्ट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर देयर कंपनी. फाइन. सो देयरफॉर यहाँ पर शेयर होल्डर्स आर नॉट अपॉइंटिंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. हियर it is being appointed by the board of directors of the company. Is it clear to all of you? Fine. अब कल को ये हो जाता है कि भाई वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो बिल्कुल ही बकवास निकलता है. फाइन. तो अब जो है वो has not been able to protect the interest of the company. तो अब उसमें who is to be blamed for that? So none is to be blamed except the company itself. कि आपने उस data bank में it was your duty to find out as to which person is the best person for the company. Fine. So therefore the point to be noted is that regular directors are being appointed by the shareholders, but the independent directors are to be selected by the company out of the data bank which is being maintained by the by some institutions which are being approved by the government of India. So it is in section 150. 150 जो बात करता है कि कहाँ जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के सिलेक्शन की. फाइन. अब दूसरी बात ये कहते हैं कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो अब जैसे
आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपको चाहिए कि कोई ऐसा फॉर्मूला आ जाए जिससे कि ना मेरे को इजी हो जाए टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अब सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149 में जाओगे, वो इतना लंबा है कि आपको आपको उसको देख के नेचुरली बड़ी बोरियत होगी कि इसको कैसे करें, ये तो रट्टा मारना पड़ेगा। फाइन, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला जो मैं आपको बताती हूँ कि सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149, उसमें आप कैश, CASH, फाइन, कैश एक वर्ड याद कर लो। सो विच पर्सन in fact is to be considered as the independent person and therefore suitable to be appointed as the independent director of the company. Fine. पहला जो सबसेक्शन 6 और सेक्शन 149 कहता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ पर्सन हु इज नॉट अ होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर और नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। फाइन, ये बात आपको करनी है कि जो होल टाइम डायरेक्टर होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे हो सकता है ना। मैंने आपको शुरू में बताया कि जो होल टाइम डायरेक्टर इज फॉर इज completely for the company, he cannot have any directorship in some other company. Fine, so whole time director cannot be appointed as the independent director. सबसे इंटरेस्टिंग बात और सेक्शन सबसेक्शन 6 और सेक्शन 149 की ये है, वो कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन कौन डिसाइड करता है कि so and so is fit to be appointed as independent director, who in the opinion of the board of the company is a person of integrity, is a person having sufficient knowledge and expertise. Fine, so eventually, it is to be decided by the board of directors of the company. So if the board decides that you are a person of integrity, if the board decides that you are a person having sufficient experience, if the board decides that you are a person having sufficient expertise or relevant expertise, then you are fit to be appointed as an independent director. But your selection is from the data bank, which is being maintained by institutions approved by the central government of India. Fine. Yes. What is your question, Balendu? Ma'am, actually, we have one more class now of Oh. Constitution. Yeah. But हमारा तो डबल होता है। ये आज मुकेश ने शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास दिया है मैम फ्रॉम 350. ओके, यस, सॉरी, यस। ओके, हमारा डबल क्लास है ना। या हाँ जी, यस मैम। हाँ, तो अभी 247 हुआ है ना। ओके, लेट मी टेक अनदर 35 मिनट्स और फिर हम वाइंड अप कर देंगे इसको। हाँ, ओके मैम, सॉरी। ओ इट्स ओके। मैम कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास 350 तक है, तो 350 से तो आप क्लास ले सकती हो कंटिन्यू। हाँ, बिल्कुल मुझे पता है मेरी क्लास डबल है आज। और देखो, मुझे पता है कि आप ऑनलाइन में आपको यू मस्ट बी फेसिंग डिफिकल्टी ऑल्सो, बट आई विल टेक वन मोर ऑनलाइन क्लास, फिर हम क्लास में ही पढ़ाएंगे। एंड वट एवर इज बिन कवर्ड इन द ऑनलाइन क्लासेस आई विल बी रिपीटिंग इन द ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो। फाइन, तो मुश्किल होता है ऑनलाइन में? नो मैम, ऐसी कोई मुश्किल नहीं होती है, समझ आता है सारी चीजें। मुझे भी ऐसा लगता है कि बट देन मेरे बाइसेस हो जाएंगे। बट आप लोग बाकी सब क्या कहते हैं? इज इट डिफिकल्ट और बोरिंग टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस? मैम ऑनलाइन बोरिंग है। आप ऑफलाइन रहते हो तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हम आपसे ऑफलाइन भी मिलेंगे। जी मैम, हम कोशिश आपसे करेंगे आप जल्दी आ जाए। हाँ, हम चाहते हैं आप जल्दी आ जाए मैम। मैं बस जल्दी, मैं यही हूँ बट ये क्लास में नहीं हूँ, तो अभी मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। फाइन। जी मैम, तो कोशिश करें ऑफलाइन, ये ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। आप क्या कह रही हैं? ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है मैम। अच्छा, आपसे ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, ठीक जी। है। मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। फाइन, ओके मैम, थैंक यू। one more class and then we'll be in the class. Fine. So देखो, उसने बड़ा ऑनेस्टली अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया। बाकी सब क्या कहते हैं? Anyone who supports what is her name? नो मैम, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन ऑनलाइन क्लासेस आल्सो, क्योंकि समझ तो आता ही है ऑनलाइन क्लासेस में भी। Okay, fine. So Swati is supporting the online class. बाकी सब जो चुप बैठे हुए हैं वो डिप्लोमेट्स हैं। मैम No, सपोर्टिंग no, ऑनलाइन ma'am. क्लास, Online one. ऑनलाइन ऑनलाइन चाहते हो? Yeah. मैम
कोई भी क्लास हो, ऑनलाइन मैम हो या उस ऑफलाइन, इतना है सही, आप ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो। अच्छा, फर्क नहीं पड़ता है। हाँ मैम, क्योंकि आप भी नॉर्मली ऑफलाइन ही लेना चाहते हो, लेकिन अभी आपके कुछ या प्रॉब्लम हाँ हाँ या ले नहीं पा। so therefore one more online class and then I'll be straight away into the class. Fine. जी ओके, मैम। एक दिन की बस दिक्कत और है। अब हम देखो, हम बात कर रहे थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में क्वेश्चन है कि हु इवेंचुअली इज टू बी सेलेक्टिंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सीधी बात सबसेक्शन 6 बोलता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर टू बी सेलेक्टेड by the board of the company, and if the board of the company is of the opinion that so and so is a person of integrity, so and so is a person having relevant experience and expertise, then so and so in fact is fit to be appointed as the independent director. अब क्वेश्चन ये है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम जो हैं, हमको कैसे लगेगा कि वाकई में ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो मैं आपको शुरू में अभी थोड़ी देर पहले बोला था, एक आप ये कैश जो है, पैसा जिसको बोलते हैं कैश, कैश याद कर लो। कैश मीन्स independent director is a person who has nothing to do with the company whereby he is being appointed as the director. Independent director is the person, meaning thereby that he is nowhere connected with that company. Fine. Independent, अब A पर आते हैं। Independent director is a one who has nothing to do with the associate company of that company. Fine. So associate company कौन सी होती है? Associate company is that in which the other company is having the substantial interest. Fine. So therefore, independent director is a person who is nowhere connected with the company whereby he is being appointed as the director. Independent director is the person who is nowhere been connected with its associate company. फिर हम आ जाते हैं एस पर। independent director is a person who is nowhere connected with the subsidiary company of that company. Fine. फिर हम एच पर आ जाते हैं। independent director is a person who is nowhere connected with the holding company of that company. समझ गए हो आप? So therefore ये वो person है who has nothing to do with the company whereby he is being appointed as the independent director, और उस कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी है, उस कंपनी की कोई एसोसिएट कंपनी है, उस कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, उससे भी आपका कोई लेना देना नहीं है। Then only you are being called as the independent person to be fit to be appointed as the independent director of the company. समझियो ये बात? ये बात समझ आई है? यस मैम, यस समझ गए। ठीक है। तो कैश मीन्स कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ पर्सन who has nothing to do with the company whereby he is to be appointed as the independent director. He has nothing to do with its associate company, nothing to do, nowhere connected with its subsidiary, and neither connected with its holding company. Fine. That person is to be called as the independent director. अब ये बात तो एक हो गई। दूसरी बात ये है कि independent director is the person who is or was not a promoter of the company whereby he is to be appointed as the independent director. Independent director is a person who was or is not connected with its associate company. Sorry, independent director is a person who was not or is not the promoter of the company, or the promoter of its associate company, or the promoter of its subsidiary company, or the promoter of its holding company. Fine. So therefore ना तो आप connected होने चाहिए, और ना ही आप जो है उस कंपनी के प्रमोटर होना चाहिए, ना ही उस कंपनी के एसोसिएट कंपनी के प्रमोटर होने चाहिए, ना ही उस कंपनी के सब्सिडरी कंपनी के प्रमोटर होना चाहिए, और ना ही उसकी होल्डिंग कंपनी के आप प्रमोटर होना चाहिए। फाइन। फिर आगे वो क्या बोलता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ पर्सन हु इन फैक्ट इज नाइदर द मैनेजमेंट, the director of the company or its associate company or its holding company or its subsidiary company. Fine. ये बात हो गया। फिर वो कहते हैं independent director is a person who in fact
neither he nor any of his relative has any connection with the holding company, with the company, with the associate company, or with its subsidiary company. So therefore, neither you nor any of your relative is having any connection with the cash. Fine. फिर वो क्या कहता है, independent director is a person who in fact neither he nor any of his relative has any connection, has any pecuniary relationship with the cash. तो पैसे का कनेक्शन आपका ना आपके रिलेटिव का कैश के साथ होना नहीं चाहिए. फाइन. Then only you are fit to be appointed as the independent director. Fine. ये आपको मैंने सिंपल आपके वर्ड्स में बताया है सबसेक्शन 6 को, कि हम हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट सो एंड सो इज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. फाइन. सो देयरफॉर you have any person who is willing to be appointed as the independent director should nowhere be connected with cash. Any person who is willing to be appointed as the independent director of the company should not have any pecuniary relationship with the cash, should not be holding any position in the cash, should not be the promoter of the cash, should neither himself nor any of his relative should be connected with cash or should have any pecuniary relationship with the cash. Yes, Shashank, bolo. मैम थोड़ा ये पेक्यूनरी रिलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है इसे थोड़ा ब्रॉड कर दीजिए, एलोबरेट करिए, नहीं समझ आया थोड़ा मुझे. फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जो कंपनी वेयर बाय यू आर विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो उसको जो है उस कंपनी को आपने जो है यू हैव प्रोवाइडेड मॉनेटरी असिस्टेंस टू दैट कंपनी. ठीक है ना, और आपका उसके साथ मॉनेटरी रिलेशनशिप है. सो देयरफॉर उस सिचुएशन में जो आपका जो है रिलेशनशिप इज अ पेक्यूनरी रिलेशनशिप. फाइन. तो जब आपके मनी इन्वॉल्व है या मनी का आपके उसके साथ कनेक्शन है, तो उस सिचुएशन में नेचुरली बाइसेस हो गए ना, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते. आपका मनी के साथ उसका कनेक्शन है, या आपका जो फॉर एग्जांपल 2% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी गिवन टू यू and subsequently you are willing to be appointed as the independent director of the company. तो आपका तो interest is in getting that 2% of the profit. So how would you be working independently for the company? Fine. यस मैम, फाइन. So ये इसको हम पेक्यूनरी रिलेशनशिप कहते हैं. So therefore ये आपका जो should either you or any of your relatives should not have any connection or connected with the cash. Then and then only you will be called as you are fit to be appointed as the independent director. Fine. Now once any person is being appointed as the independent director, then he will be holding this position for a period of 5 years, and then he is eligible for reappointment also. But uske baad jo hai, for the third time he cannot be appointed as the independent director unless and until there is a gap of 3 years. Fine. तो 10 साल आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए हो, फिर उसके बाद देयर हैज टू बी अ गैप ऑफ 3 years, देन you are fit to be appointed as the independent director of that company. Fine. So ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने ये जो केस अभी टाटास एंड मिस्त्री के बीच में जो केस हुआ था, सो वो एक जो लीगल बैटल कोर्ट में लड़ी गई थी, तो उसमें जो है आप देखो कि अल्टीमेटली द केस वाज बीइंग डिसाइडेड इन फेवर ऑफ रतन टाटा. तो उसमें जो द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाज वेरी इंपॉर्टेंट. मिस्टर वाडिया वाज बीइंग अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड ही डिसाइडेड इन फेवर ऑफ साइरस मिस्त्री. सो बट देन क्या उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो डिसीजन था, whether the Tata's company in fact in a way approved
were in a way supported the decision of independent director? आंसर था नहीं. तो टाटा कंपनी ने जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो व्यू था अबाउट द टसल बिटवीन रतन टाटा एंड साइरस मिस्त्री, the opinion was, the decision was altogether rejected by the Tata company. But eventually कोर्ट ने क्या कहा था वो हम डिटेल में केस करेंगे. फाइन. लाइकवाइज अगर आप देखो ये वाला केस आपका सोलोमन वाला केस है. सोलोमन वाले केस में देयर वाज नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो अब वो वाइंडिंग अप में कंपनी चली गई और इवेंचुअली देयर वाज अ लॉस टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. तो अगर had there been independent director in the company, then probably the interest of unsecured creditor in fact would have been protected. Fine. So इसीलिए there is a need to protect the interest of the creditor. There is a need to protect the interest of the shareholder, and that would be possible only by appointment of the independent director. Fine. So therefore ये एक independent director के बारे में बात की थी. सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, for any person to be appointed as the independent as a director of the company, whether as a in a sense ki the regular director or as an independent director, you must in fact have the director identification number, which is being called as DIN. Fine. So without DIN, in fact, nobody in fact can be appointed as the independent director of the company. Now question है कि ये जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो ये डिन जो है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब मेरा क्वेश्चन ये भी है, क्या आप लोग जो एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, शायद मैंने पहले भी ये किया था कि एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आर यू एलिजिबल to apply for a director identification number? Are you eligible to be appointed as the director of the company? आप एलिजिबल हो, आप डायरेक्टर्स अपॉइंट हो सकते हो कंपनी के. कोई भी बन सकता है. मे बी मैम वी कैन हाँ, बी. क्यों नहीं बन सकते हो आप? 18 इयर्स के बाद जो है उसमें कोई ये थोड़ा ना, वो ये उसमें कोई क्वालिफिकेशन की बात नहीं है. फाइन. So therefore, but ये है कि you in fact should not be disqualified. You should not be disqualified from contracting. You should be competent to contract. Fine. वो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है. so therefore, but then अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो किसी कंपनी का, तो पहले तुम्हारे हाथ में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए. फाइन. एंड दिस डिन इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिखो for director identification number, and once the application is being received by the central government, then within a period of 30 days the central government is required to provide the director identification number to you, and then within a period of 30 days of receiving this director identification number, you are required to send an intimation to your company about this DIN number. And further, once the company receives the director identification number, it will be sending an intimation about your number to the registrar of the company. Fine. So point is that none of us can be appointed as a director unless and until we have the director identification number beforehand. Fine. ये एक बात है. फिर ये naturally जैसे I started by saying that appointment of it is only the individuals who could be appointed as the director of the company. And आजकल के टाइम में आप देखो, it would not be wrong to say that the wealth of the country is being controlled by corporate houses. ये गलत statement तो नहीं है ना कि when I say that the wealth of the country has been controlled by the corporate houses? Is it a wrong statement? आप देखो, हम लोग तो सर्विस क्लास है. अब मैं बहुत ऑब्जर्व मैं करती हूँ कि अब कभी भी किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओ, चाहे आप ट्रेन से जाओ, चाहे आप बस से जाओ, तो आप देखो कि
everybody is busy with the mobile phone. और जो बात कर रहे हैं उनकी बात क्या होती है कि हम मेरे को ये टारगेट फुल मेरा ये टारगेट है, मुझे इतना करना है, और वो क्लाइंट ने ऐसा बोला। इनफैक्ट मेरा ये ऑब्जर्वेशन है 60% लोग तो ऐसा ही बात करते हैं। तो ये कॉर्पोरेट्स जो हैं, अब आप देखो जॉब्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर में ही है, अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही है ना मूव। तो अब तो प्राइवेटाइजेशन है, तो wealth of the country certainly is being controlled by the corporate houses. So since the wealth of the country has been controlled by the corporate houses, so these corporate houses, they owe responsibility also. तो जब आप वेल्थ आपके कंट्री की आप कंट्रोल कर रहे हो, तो आपकी एक 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 कंट्री की तरफ, सोसाइटी की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फाइन। So now therefore the corporates houses in fact are the institutions, and they therefore have a responsibility towards the society, and that is why अब सरकार ने ये बोला है कि भाई जो corporate social responsibility है, but the word is responsibility not accountability. Fine. So corporate social responsibility है, तो अगर आप इतना profit earn कर रहे हो, so a portion of that profit is to be spent for the welfare of the people. ये अब मैंडेटरी है, जो पहले नहीं था। तो ये इसीलिए हुआ ना, क्योंकि अब तो नेचुरली ग्लोबलाइजेशन है। अब तो बाहर की कंपनीज जो है वो इंडिया में बोलती हैं वी आर रेडी टू मेक एन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडेड हमारे को टैक्स एग्जम्पशन दो। और हर कंट्री चाहती है कि फॉरेन कॉर्पोरेट हाउसेज इनफैक्ट शुड मेक एन इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री, बिकॉज दैट वुड इवेंचुअली लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, and that eventually in fact generate employment for the people of that country. So therefore ye jo institutions hain, they are very powerful institutions, and therefore it is also necessary that in these powerful institutions only competent persons are to be appointed as the directors, because the success of the company lies in the hands of the directors. तो वो कंपनीज को जैसे चलाएंगे, उसी से कंपनी जो है आगे बढ़ेगी। So that is why the companies in fact are very careful in appointing the professional people, or in selecting the professional people which eventually would be helping the company to move forward. So therefore दैट इज वाई आप इस चैप्टर में देखो कि द पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर इज बीइंग मेंशन्ड इन डिटेल, कि आपको जो है द कंपनीज इनफैक्ट एनी पर्सन हु इज बीइंग अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर, सो it is also necessary that not only the competent person is to be appointed as the director, but also the efficient persons. And therefore since they are a powerful institution and they owe responsibility towards the society, and it is necessary to define the positions of the director. ठीक है, तो अब हम पोजीशन इसलिए डिफाइन करना चाहते हैं क्योंकि हम आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करना चाहते हैं। इफ सम लॉस हैज बीन कॉज्ड टू द पब्लिक, if there is a loss of the investors, if there is a loss to the environment, if you have caused environmental pollution, so the polluter pays principle. So therefore ये जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब क्या इनके लिए ही है कि ये कॉर्पोरेट हाउसेस जो हैं, इनको जो है इन पे दे शुड इंश्योर कि दे शुड नॉट इनफैक्ट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। तो उसमें आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, बट देन लेट अस ट्राई टू इनफैक्ट डिफाइन द पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। तो अगर हम कहें कि भाई एक्चुअली डायरेक्टर की पोजीशन क्या होती है कंपनी में, है तो भाई डायरेक्टर मींस एनी पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसकी पोजीशन क्या हुई? पोजीशन ये कि समटाइम्स द डायरेक्टर्स आर बीइंग कॉल्ड एज द agent of the company, sometimes the directors are being called as the servant of the company, sometimes the directors are being called as the trustee of the company. अब एक नई थ्योरी है, वो कहती है directors are to be called as the organs of the company. So as per the organic theory, the directors are being called as the organ of the company, and therefore that's the new response. On the basis of this organic theory, the
company is to be held liable for the act of the director. Fine. तो अब अगर मैं ये बोलूं कि can we say that the directors are the servants of the company, क्योंकि मैंने I have used some 4 expressions, but then I must also tell you that these expressions in fact they are not exhaustive of the position of the director. तो इसका मतलब ये है कि इनकी कोई 5th पोजीशन भी हो सकती है. फाइन. तो आज तो हम उनका कीपिंग इन टू माइंड कि भाई जिस तरह के वो फंक्शंस करते हैं, जिस तरह से उनकी ड्यूटीज है, उस बेसिस पे हम कहते हैं भाई देखो कई बार तो डायरेक्टर्स जो है वो एज एन एजेंट काम करते हैं कंपनी का. भाई कई बार तो डायरेक्टर्स जो है वो एज अ ट्रस्टी काम करते हैं कंपनी का. कई बार जो डायरेक्टर्स जो है वो सर्वेंट्स भी होते हैं. तो अब क्वेश्चन ये है कि जब हम ये स्टेटमेंट देखते हैं तो इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में हम क्या बोलते हैं. फाइन. तो क्या हम कह सकते हैं कि whether the directors are servants of the company, इस बात को मानते हो आप कि डायरेक्टर्स can be called as the servant of the company? क्या डायरेक्टर सर्वेंट्स होते हैं कंपनी के? यस मैम, सर्व ही करते हैं तो सर्वेंट कह सकते हैं. ओके. तो वो कहते हैं कि भाई अब जैसे अगर हम ली वर्सेस ली वाला केस उठा लें या हम सोलोमन वाला केस उठा लें, जो पर्सन इज होल्डिंग 99% शेयर्स ऑफ द कंपनी, क्या वो कंपनी का सर्वेंट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ली वर्सेस ली केस में तो कोर्ट ने कहा ही था कि मिस्टर ली इनफैक्ट वाज द वर्कर ऑफ द कंपनी डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वाज होल्डिंग 99% शेयर ऑफ द कंपनी. क्यों? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है भाई, कंपनी ने आपको हायर किया है जबकि आप ही ने कंपनी बनाई है, बट बाद में कंपनी बनने के बाद इट्स अ सेपरेट पर्सन और कंपनी ने आपको हायर किया है. तो जब आपको हायर किया है तो you are the servant of the company. So therefore now you have a dual position in the company, one as the servant, the other one as the director of the company. So therefore you can cite the case of Lee whereby the court said that the Mr. Lee was the servant of the company. Fine. Was the worker of the company. और आपको ये तो पता ही है कि servant में criteria क्या होता है, वो is it a case of contract of service or contract for service? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है ना, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप. जैसे मैंने पहले भी एक बार क्लास में बोला था भाई मैं भी आई एम द मेरा और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच में कनेक्शन मास्टर सर्वेंट का है, दो आई एम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एज टू हाउ डू आई टेक माय क्लासेस. दिल्ली यूनिवर्सिटी इज नॉट रेगुलेटिंग मी, बट देन मुझे उसके सर्विस के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ही मैं काम कर सकती हूँ. So I am the servant of the company. So therefore one position of the director is that they are being called as the servant of the company. फिर दूसरी position क्या होती है कि they are being called as the agent of the company. Agent of the company. अब देखो वो in 99% of the time we say that the directors are agents of the company. क्यों? क्योंकि कंपनी तो एक लीगल पर्सन है ना, उसको तो लॉ ने बनाया है, वो अपने उसका तो कोई दिमाग नहीं होता, उसका तो कुछ नहीं है. तो therefore it is the directors who run the affairs of the company. So therefore they are being called as the agent of the company. So सारे केस उसमें डाल सकते हो. फिर क्या कहते हैं कि sometimes the directors being called as the trustee of the company. क्यों trustee? क्योंकि कंपनी का जो पैसा जो है वो डायरेक्टर्स के हाथ में ही होता है. So what is expected from the trustee of the company? That they must use the company's capital for the benefit of the company. Fine. They must not in fact gain an undue advantage at the cost of the company. Fine. So therefore, since the capital of the company, the shares of the company are in the hands of the directors of the company, so they are being called, sometimes they are being called as the trustee of the company. अब लास्ट आपका है कि ऑर्गेनिक थ्योरी. ये ऑर्गेनिक थ्योरी से तो आप पहले वाले जो 3 जो हैं वो एक तरफ से बिल्कुल बेकार ही हो जाते हैं. व्हाट इज दिस ऑर्गेनिक थ्योरी? ऑर्गेनिक थ्योरी कहती है द डायरेक्टर्स आर बीइंग कॉल्ड एज द ऑर्गन्स ऑफ द कंपनी. सो देयरफॉर अब कंपनी जो है वो, जैसे कि मैंने बोला कि फ्रॉड है, फ्रॉड करने के लिए यू नीड मेंसरिया. अब कंपनी ये नहीं कह सकती है कि भाई मैं फ्रॉड नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो इंडिविजुअल थोड़ी ना हूँ, आई एम नॉट अ ह्यूमन बीइंग, मैं मेंसरिया हो ही नहीं सकता मेरे केस में, मैं लीगल पर्सन हूँ, सो देयरफॉर मेरे पे लायबिलिटी नहीं आएगी.
मुझ पे इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। अब ऑर्गेनिक थ्योरी ये कहती है कि भाई even for any case which requires mensaria, which requires intention. Now whatever is the intention of the head and the brain of the company, the head and the brain of the company means that those who are in directly in control of the affairs of the company, they are being called as the head and the brain of the company. Fine. So therefore उसमें जो है that head and brain of this individual is to be considered as the head and the brain of the company, and therefore the company is to be held liable. अब कंपनी कह नहीं सकती है कि उसका वो जो गिल्टी माइंड नहीं है। सो ऑर्गेनिक थ्योरी कहती है आपका वही माइंड है जो आपको चला रहे हैं, उनका माइंड आपका माइंड किया जाएगा। So they are being considered as the organ of the company, and therefore company is to be held responsible for the actions of its organs. Is it clear to all of you? Fine. So ये पोजीशन की बात थी। बाकी क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा और फिर मेरे को लगता है कि आपके सिर से ही निकलेगी बातें, तो आज मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। एंड अगेन माय रिक्वेस्ट, वन मोर क्लास एंड देन आई विल बी स्ट्रेट अवे इनटू द क्लास। फाइन। तो ये इसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछो। एनी क्वेश्चन? खत्म करें क्लास? हेलो? No question. Okay, okay. So that's all for today, and rest in fact we'll do in the next class. Fine. Okay then. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, okay. Thank you so much.